Hello everybody, welcome to the first class of numerical methods. So today we will see lecture number 1 from the same subject, and today's topic is about subject introduction, and there are few terminologies which you all must know before we will start the syllabus or we will start learning what actually we have to learn. Okay, we know that there are two methods to solve equations or to evaluate integrals or to solve differential equations. And such methods are like analytical method and another one is a numerical method. Analytical method includes analysis of equations and apply ready-made formulas to obtain a solution. What does that mean? Whenever we have to solve any problem, we have to solve any equation, any integral or any differential equation, and there are ready-made formulas which are available to us. You all must know about them. You must have read that in your 11th and 12th class. What we do is we find out the formula which is best suitable for that particular problem and we solve the equation. दैट इज़ वॉट एनालिटिकल मेथड इज़ ऑल अबाउट. इसमें हम वो चीज़ें करते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होती हैं. हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. हम देखते हैं कि हमारी इस इक्वेशन के लिए कौन सी फार्मूला फिट बैठती है ताकि हम उस फार्मूला को उठा के अपना जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं. सी फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ एन इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स. हम सिंपली क्या करते हैं, वी नो वी हैव टू पुट द लिम्स एंड वी हैव टू सॉल्व दिस. दीज थिंग्स आर रेडीमेड टू अस. उन मेथड्स को जिनको हम रेडीमेड फार्मूलाज यूज़ करके सॉल्व करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड. अब आता है हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड. हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल मेथड में? इन न्यूमेरिकल मेथड्स, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सम फार्मूला, we perform stepwise calculations using some algorithms or numerical procedure and arrive at the same result. वट वी डू इज़ कि हमारे पास क्या होता है कि हम वो फार्मूला जो हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड होती हैं उन्हें यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम स्टेप वाइज कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं जिन्हें हम एल्गोरिथम्स बोलते हैं या जिन्हें हम प्रोसीजर्स बोलते हैं, और हमें सेम रिज़ल्ट मिल जाता है जो हम यूज़ कर लेते हैं एनालिटिकल मेथड में. फिर हमें ये चीज़ें यूज़ क्यों करनी है? देन वाई न्यूमेरिकल मेथड्स, वाई नॉट यूज़ एनालिटिकल मेथड्स? द थिंग इज़, जब हम एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम हर एक प्रॉब्लम को हर एक रेडीमेड वी कैन नॉट हैव अ सिंगल रेडीमेड फार्मूला इन ऑर्डर टू सॉल्व ईच एंड एवरी इक्वेशन, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. नो, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस इक्वेशन में कौन सी फार्मूला फिट बैठती है ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें. लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स में अगर हमने कोई जनरलाइज्ड एल्गोरिथम, कोई ऐसा प्रोसीजर बनाया है, हमारे पास डेवलप किया, हमारे पास लाखों हज़ारों इक्वेशंस क्यों ना हो, हमें बस वो एक सिंगल एल्गोरिथम को यूज़ करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इवन इन ऑर्डर टू सॉल्व थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस वी ओनली हैव टू फॉलो द सेम एल्गोरिथम, सेम प्रोसीजर, सो दैट वी कैन यूज़ दैट. ठीक, और हमें वही सोल्यूशन मिल जाता है. लेकिन एनालिटिकल मेथड में उसका उल्टा है. Numerical method develops accurate and fast approximation to problems whose exact solutions are difficult to find because of their complexities. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए, क्योंकि अगर हम बाकी जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात आती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई अ सिंगल फार्मूला एंड सॉल्व दैट, राइट. बट यहाँ पे अगर हमारे पास कितनी ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें बस वही एक एल्गोरिथम को, एक प्रोसीजर को फॉलो करना है. अगर वो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन ना दे, बट इट विल गिव अस द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन एंड दैट सोल्यूशंस विल बी एक्यूरेट एंड फास्ट एज वेल. दैट इज़ व्हाट न्यूमेरिकल मेथड्स इज़ ऑल अबाउट. नाउ देयर आर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स. कहाँ पे हम न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं? नाउ यू ऑल आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सो वी विल सी द एप्लीकेशंस इन द सेम फील्ड एज वेल. सो सिविल इंजीनियरिंग में हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द स्ट्रक्चरल एनालिसिस. अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल्स को साइमुलेट करना है, वहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़
आपकी हेल्प चाहिए, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है. Even in order to go with the environmental simulation, you again use the numerical methods, and there are some geographic information systems and GPSs which again uses the numerical analysis or methods. In mechanical and aerospace engineering, it is used in heat flow, it is used in the subject called as fluid dynamics, and it is also used in the structural optimizations. In electrical and computer science engineering, it is used in network analysis. How your network is going to be, you are going to analyze that using the methods of numerical analysis. Whenever you have to process signals, that is, there you can use numerical method subject. And in order to find the electromagnetic field of any area, say for example अगर आपको कहीं पे लैंड सेट करना है या कोई भी चीज़ को सेट करना है, you have to calculate the electromagnetic field before setting that. तो वहाँ पे भी आपको जो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो न्यूमेरिकल मेथड्स के वो प्रोसीजर्स है, वो एल्गोरिथम्स हैं जो आपको एक्यूरेट फास्ट अप्रॉक्सीमेशंस देते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को कैलकुलेट करना चाहिए ताकि वो आपको हर एक लिहाज से हेल्प कर सके. So these were few applications of numerical methods. Okay. So till now we saw what basically is a numerical method, why we need numerical method when we already had an analytical method. Now the question is why we should study numerical analysis or numerical methods. We should study it so that we must get to know how fast errors can cause problems. अगर आपके किसी भी प्रोसीजर में किसी भी चीज़ में एरर आता है वो कितनी जल्दी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. जितना आपको ये चीज़ पता चलेगा उतना अच्छा आप एक अपना एल्गोरिथम बना सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम को आप अगर करने ही ना दें. और दूसरी चीज़, वी नीड टू स्टडी दिस इन ऑर्डर टू फाइंड द बेटर एल्गोरिथम्स दैट कॉज फेवर एरर्स. ऐसे एल्गोरिथम्स को हमें डिज़ाइन करना है, ऐसे प्रोसीजर्स को हमें बनाना है जिनसे बहुत ही कम एरर्स प्रोड्यूस हों या हों ही नहीं. Okay, so okay, before basically starting the solutions of linear and non-linear equations from the syllabus, there are a few terminologies which we must know what they are. You must all be knowing that what do you mean by algebra? What is an equation? कितने टाइप्स की इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, ये 3 चीज़ें पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हम आगे बढ़ सकें. हम सब लोगों को पता है कि हम लेट्स स्टार्ट विद द अलजेब्रा. व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा? इट्स वेरी सिंपल दैट algebra is all about puzzles. Here is one for you. Say for example I will write a square plus 2 is equal to 5. We just have to find the number in the box. When the number is added to 2 which equals 5, it's very simple. We know that if we will have a 3 and we will add 2 to it, that will be equal to 5. So this puzzle can be asked, the same puzzle can be asked in different ways. We can say x plus 2 is equal to 5. Find x. We just use the letter in place of the box. These letters are called as variables, right? Or these are also known as unknowns. Since its values are not known to us, that is the reason why. This is algebra. What is algebra? Algebra deals with variables and unknowns, and we are expected to find their values. Okay, so this is what we called as an algebra. Algebra में क्या होता है, वहाँ पे involvement of variables होता है, involvement of unknowns होता है, and we are simply expected to find their values. Why we use variables? Why not boxes like these? Why we have to use variables? Why not boxes like these? The reason is, अगर हमारे पास एक बहुत ही बड़ा expression होगा, it's very difficult for us to find different symbols and different shapes. Like I will make an expression of like this square, then a delta sign plus circle plus
say 4 is equal to 7. So you have to simply think about all these shapes. The expressions can be too long, it can be too big in order to find the result. So we can use the same expression by using the variables like x plus y plus z plus 4 is equal to 7. This one is more convenient as compared to the previous expression. So we can say by using the variables, by having the algebra, it makes our life much simple. So we can say algebra makes life simple. So this is what algebra is all about. Algebra is nothing but it's basically using the variables and unknowns whose values we have to find. It is expected that we should find the value. So that's what algebra is all about. Hope you got it. Now the next question before starting the numerical methods is we must know what is an equation. You all must know about it. What is an equation? Okay, wait a second. Equation. Algebra helps us write long phrases in a very short way using variables, right? What we do in algebra is we have long phrases and using variables we can write them in a shorter manner. How do we write the sum of, say for example, I have a question. How do we write the sum of 3 and 7? Simply we can write it like 3 plus 7, isn't it? This is what we can write. If I will modify this question a bit, I can write it like this. Say if I would ask you sum of a number and 7. Since this number is unknown to us, we can use a variable in its place, isn't it? That means we have to apply the algebra over here. So I can write let the number be x plus 7. Okay. So therefore, both 3 plus 7 and x plus 7, these are both called as expressions, isn't it? But here the first one, and let this be second, 3 plus 7, no doubt it is an expression, but in this expression there is an involvement of numbers only. It is called as numerical expression. Okay. And in the second one, there is an involvement of a variable, an involvement of an unknowns, which we don't know what the value will be. Where there is an involvement of variable, that means where in an expression there is an involvement of algebra, such expressions are called as algebraic expression. Okay. Okay. Now one more question to you. Say sum of a number and 7 equals 12. Now see, it's getting very interesting. Okay, we will break this question into parts. Sum of a number, then 7, then equals 12. That means sum of a number, let the number be equal to x, then there's a 7, then there's a 12. We know equals means equal to sign and there's a sum, so we can add x plus 7 is equal to 12. Can you tell me, क्या ये expression है? Think. No, it's not an expression. No, ये expression नहीं है. This is called an equation. Since it has an equal to sign,
This is called so because we are equating two sides, the left hand side and the right hand side. So this is what equation is all about. Okay, this is what an equation is all about. Hope you understood it. Okay. Now, you know the types of equations. We have two types of equations. One type is called as the linear equation. Another is called as the non-linear equation. You know वो equations जिनकी डिग्री जो अटैच्ड होती है इसके साथ उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. और वी कैन से लीनियर इक्वेशन is a polynomial of degree 1. Say for example 3x plus y is equal to 7. Both the variables have a degree 1, so it is a linear equation. You all must know this. Non-linear equations जो होती हैं वो दो categories में fall करती हैं. One is called as the polynomial. Another one is called as the transcendental equations. Polynomials जो होते हैं ये वो expressions होते हैं of more than two algebraic terms. So polynomials are expressions of more than two algebraic terms. पॉलिनोमियल एक नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं. ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे हमारे पास एक से दो से ज़्यादा अलजेब्राइक टर्म्स होती हैं. से फॉर एग्जांपल से an x raised power n plus an minus 1 x raised power n minus 1 plus an minus 2 x raised power n minus 2 and so on. This is the general polynomial formula plus a1 x1 and plus a0 is equal to 0, right? Where a n factorial is equal to 0. This is the nth degree polynomial in x, and x has n roots, you must all know this. And these roots may be real and different, real and repeated, complex and like that. This is what polynomial is all about. Non-linear equations हमारे पास दो तरीकों की होती है. एक होता है polynomial non-linear equations, दूसरा होता है transcendental equations. पॉलिनोमियल नॉन लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं, वो इक्वेशंस होते हैं जहाँ पे हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे दो से ज़्यादा अलजेब्राइक टर्म्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर दैट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होती हैं नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशंस. उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस. फॉर एग्जाम्पल x e to the power x minus x sine of x is equal to 0. 2x minus x minus 3 is equal to 0. A transcendental equations may have finite or infinite number of real roots, or may not have any real root at all. या तो इसमें इन्फिनाइट या तो फाइनाइट रियल रूट्स होते हैं, या इसमें कोई भी रूट नहीं होगा. नो रियल रूट एट ऑल.
These includes ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं हमारे पास? एक तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड logarithmic functions. So that is what a transcendental equation is all about. इन शॉर्ट में ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल्स का या लॉगरिथमिक का. नाउ as I told you, there are one more question which we must know. So we understood what's an algebra, we understood what's an equation, and there are two types of equations which we must know. Now the question is how to find solutions of nonlinear equations and linear equations, which is in your syllabus. This is what we will see in the next lecture. Thank you so much for today.